On the screen is one of the most designated platform for MBBS degree in foreign. Your dream is just one step ahead. Contact the number for more details. Hello everyone, welcome back to NEET Wala Chemistry. So today our topic is spectrum and spectral lines. So before going into it, let me tell you something about the topic. First thing is that it is the most attractive part of atomic structure and we are going to handle it in the easiest way. ये टॉपिक के अंदर सिर्फ 2-3 कंसेप्ट ही है और हर बार क्वेश्चन वही 2-3 कंसेप्ट से ही आता है और इस लेक्चर में हम वो 2-3 कंसेप्ट इजीली कवर करेंगे और एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो you will get each and every type of previous year questions and you will surely get a clear cut idea about the spectral lines. और ये मेरा तुमसे वादा है कि after watching this video you will surely be able to solve any type of question from the spectrum and spectral lines that may be NEET, maybe of AIIMS, maybe of JEEP or anything. Okay, so now I am going to cover the whole topic with very important mnemonics so that you can remember the whole topic very easily. Okay, पर end तक देखना क्योंकि at the last part I will discuss about the most important previous year questions. Okay, और अगर अच्छा लगे तो like and subscribe तो बनता है. तो चलो आज की खाता खोलते हैं. पहली बात तो ये है कि ये स्पेक्ट्रम चीज क्या है, भाई ये आया कहां से है और काम क्या करता है. लेट मी टेल यू, फॉर नीट एम्स एंड एनी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यू वोंट नीड मच अबाउट द स्पेक्ट्रम. तो मैं तुम्हें सिर्फ वही बात बताऊंगा, वही चीज डिस्कस करूंगा जो तुम्हें नीट की क्वेश्चन पेपर में दिखेगा. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेकर कोई फायदा नहीं. ओके, तो फर्स्ट सी व्हाट इज स्पेक्ट्रम. So here you can see it is a prism. It is a prism or spectroscope, and whenever any kind of radiation is passed through this prism, it is any kind of radiation, not only light radiation. Please remember this. It is a very common silly mistake. It can be any type of radiation and light radiation is one of the most common type. Okay, so when any radiation is passed through this prism or spectroscope, what happens? This specific ray is divided into a number of rays, and if we put a screen here, we can get a lot of patterns in the screen. So it is the screen here and the light radiation is divided into a lot of rays and producing a specific pattern on the screen, and this phenomena is known as the dispersion. Okay, so due to this dispersion property of the radiation, we will get a specific pattern on the screen, and that pattern is known as spectrum of this radiation. समझ में आया? तो देखो, अगर कोई भी रेडिएशन इस प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से जाता है तो ये अ नंबर ऑफ रे में डिवाइड हो जाता है, एंड ऑन द स्क्रीन इट विल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पैटर्न, और वो पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट? स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्पेसिफिक रेडिएशन, एंड ऑल द इंडिविजुअल लाइंस और रेज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस. तो स्पेक्ट्रम बनता है स्पेक्ट्रल लाइंस से, और ये पूरा पैटर्न which we will get on the screen is known as spectrum of this radiation. तो ये था स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस के बेसिक आइडिया.
अब मैं तुम्हें बता दूं, इस सब से नीट का कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अब हम जाएंगे असली दुकान में। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर से ये स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस का एक्चुअली क्या लेना देना है। तो चलो देख लेते हैं। सो नाउ यू सी हियर वी विल सी फॉर द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका मतलब क्या है? अब यहां पर देखो, इट इज a diagram of a simple atom. Here you can see the nucleus and all these are the orbits around the nucleus. So it is the nearest orbit from the nucleus. That means it is n equal to 1. After that is n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 5, 6, 7 and so on. Here you can see n equal to infinity. इसका मतलब the nearest shell from the nucleus is n equal to 1 and the farthest one is n equal to infinity. And you all know the electron in n equal to 1 orbit has the lowest energy, and the energy of the electron increases from n equal to 1 to n equal to infinity gradually. That means सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा होगा ग्राउंड स्टेट से, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा होगा सेकेंड सेल से, एंड द इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट, इफ दैट इज पॉसिबल, इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ओके, तो ये सब दिमाग में रखते हुए जरा सोचो कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को पीछे वाले सेल से आगे वाले सेल पे ले आए, that is if we move any electron from the far orbit, say n equal to 5, towards any nearer orbit, say n equal to 3. So if we move an electron from n equal to 5 to n equal to 3, that means the energy of the electron will decrease and the excess energy will be radiated out, and that radiation will again create a spectrum over the screen. You remember any radiation can produce any spectrum? So if we move any electron outer orbit to an inner orbit, it will radiate energy and that radiation will produce spectral lines. अब समझ में आया कि कैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज प्रोड्यूस स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब हमें देखना है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होते हैं और इसका डिवीजन क्या है। ओके, अब देखो, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इन द n equal to 2 shell and we are taking that electron from n equal to 2 to n equal to 1. So it is the movement from n equal to 2 to n equal to 1. That means the energy of this electron will reduce and the excess energy will be radiated out, and that will produce a spectral lines. So due to this movement of electron from n equal to 2 to n equal to 1, we will get a spectral line in the screen. Now you see again, if I move an electron from n equal to 3 to n equal to 1, we will get another spectral line. Similarly, from n equal to 4 to n equal to 1, another spectral line, n equal to 5 to n equal to 1, n equal to 6 to n equal to 1, and similarly n equal to 7 to n equal to 1, and so on. So for every movement of this type, that is यहाँ पर फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो that will produce spectral line. सेवेंथ ऑर्बिट से पहले वाला ऑर्बिट पे आया तो that will also produce a spectral line, and all these spectral lines has a similarity. बता सकते हो क्या है वो? देखो, every electron is coming from any other orbit to n equal to 1, that is ground state, है ना? हर एक इलेक्ट्रॉन वो थर्ड ऑर्बिट से हो सकता है, फिफ्थ ऑर्बिट से हो सकता है, आ कहां पे रहा है? आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे, n equal to 1 पे. So they have this similarity, and this group of spectral lines are discovered by
Lyman, scientist Lyman, and accordingly they are named Lyman series of spectral lines. I will tell all these very easily in a chart. कैसे याद रखना है वो सब, ओके? पहले समझ लो. अब देखो, ऐसे ये 6 स्पेक्ट्रल लाइंस n इक्वल टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट पे आया. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पे है और वो आ रहा है n इक्वल टू 2 पे. दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए रेडिएशन एंड उससे भी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होगा. तो ये यहां पर देखो, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है. सिमिलरली फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2, सिमिलरली 5th ऑर्बिट से आ सकता है, 6th ऑर्बिट से आ सकता है, 7th ऑर्बिट से भी आ सकता है, एंड सो ऑन. It can come from the infinite orbit also, that is from n equal to infinity to n equal to 2. तो ये सब स्पेक्ट्रल लाइन का सिमिलरिटी क्या है? बहुत इजी है. ये सब स्पेक्ट्रल लाइंस n equal to 2 that is सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है, and this will also create another series, that is the BOHR'S series. I will again tell you that in separate chart. Now you see, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है. कहां से भी हो सकता है, आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे. सिमिलरली कुछ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा n इक्वल टू 3 पे. दैट मे बी फ्रॉम n इक्वल टू 4, मे बी फ्रॉम n इक्वल टू 5, मे बी फ्रॉम 6th ऑर्बिट, 7th ऑर्बिट, मे बी फ्रॉम इन्फिनाइट ऑर्बिट, पर आएगा n इक्वल टू 3 पे. ओके, एंड दे विल क्रिएट another series. Similarly कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा n इक्वल टू 4 दैट इज 4th ऑर्बिट पे, कुछ आएगा 5th ऑर्बिट पे, 6th ऑर्बिट पे, 7th ऑर्बिट पे. ओके, तो पहले अच्छे से डायग्राम को देख लो, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे. ठीक है? सो हियर यू कैन सी द होल सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू n इक्वल टू 3 ऑर्बिट, and the series is known as Paschen series. Okay, scientist Paschen has discovered all these spectral lines, and again these spectral lines come to n equal to 4. Those are known as bracket, wo wala bracket. And some spectral lines we will get when electrons will jump to n equal to 5, that is Fund series, not P fund. P will remain silent. It is just Fund series, and the last one is Humphrey series, and it is not so much important for our topic. For Humphrey series, the electron will come to the 6th orbit, that is n equal to 6. Okay, अब ये तो था समझने के लिए. अब इतना सब कुछ हम याद कैसे रखेंगे? हमारा काम है याद रखना और वो नीट में प्रोड्यूस करना. एनटीए वाले क्वेश्चन देंगे, हम देखेंगे और 30 सेकंड में आंसर देकर निकल जाएंगे. ये तो हमारा काम है ना. तो ये सब हम लेके क्या करेंगे? तो चलो अब एक इजियर वे देख लेते हैं टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली, एंड दैट वुड बी वेरी मच एफिशिएंट फॉर यू. सो इन दिस चार्ट वी आर गोइंग टू रिमेंबर द होल सीरीज इन अ नटशेल. बहुत अच्छे से याद रहेगा. देखो यहां पर एक निमोनिक है. लंदन बहुत पुराना है. तो दिस इज द निमोनिक फॉर द सीरीज. अब बताओ लंदन, एल से क्या होगा? लाइमन. सो फर्स्ट कम्स द लाइमन सीरीज, एंड हियर टू टर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड. एक है n1 एंड दूसरा है n2. बहुत अच्छे से याद रखना. n1 इज द ऑर्बिट to which electron is coming, that is electron is coming to n1 orbit, and n2 is electron is coming from the orbit n2. So electron is coming from n2 orbit to n1 orbit. ये अच्छे से याद रखना क्योंकि n1 and n2 कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो 2 is greater than 1, so electrons will coming from a distant orbit. इलेक्ट्रॉन दूर के ऑर्बिट से आएगा, इसका मतलब n2 इज दैट ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा. सो n1 विल बी द ऑर्बिट टू व्हिच इलेक्ट्रॉन इज कमिंग. ऐसे तुम याद रख सकते हो. अब देखो लाइमन सीरीज में
N1 क्या था? N1 will be ground state, that is N1 will be 1, that is ground state. तो इलेक्ट्रॉन आएगा ग्राउंड स्टेट पे. अब कहां से आएगा? N2 में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinity. From any orbit it can come, and will come to which orbit? Will come to the first orbit. So for Lyman series, electron will come to the first orbit from any of the other orbits. अब हम सेकेंड सीरीज पे चलते हैं. तो लंदन बहुत, अब B for बहुत and also B for BOHR series. And in BOHR series, you all know N1 will be 2 and N2 will be any orbit, that is 3, 4, 5, 6, 7, maybe infinity. And similarly Purana, that is P, and P for our next series, that is Passion. For Passion series, N1 will be equal to 3 and N2 will be 4, 5, 6, 7 and infinity. Next series is बहुत, that is again B, and B for bracket. Here N1 is 4 and N2 will be 5, 6, 7 towards infinity. Next series again Purana, P for fund, PFUND, fund series. N1 is 5 here and N2 will be 6, 7, infinity. And lastly है H for Humphrey. For Humphrey, N1 will be equal to 6 and N2 will be 7 and towards the infinity. अब देखो ये गया हमारा 6 सीरीज फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन, बॉमर, पैशन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्रे. अब देखो ये सब स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज है. अब ये सब स्पेक्ट्रल लाइंस एक एक रेडिएशन है, इसका अपना एक वेवलेंथ होगा, अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑल दिस सीरीज कैन बी अगेन डिफरेंशिएटेड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लाइमन सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सब होगा यूवी रीजियन में, एंड बॉमर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगा विजिबल रीजियन में. मतलब the spectral lines for Böhmer series we can see it in our naked eye, that is they will remain in the visible region, and all these other four will be put into the infrared region. So please remember these regions. In NEET question paper they often ask about all these regions. अब बाकी क्या है? उधर देखो डिवीजन, ये बाकी है. ये डिवीजन क्या चीज है भाई? देखो लाइमन सीरीज में तो एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइंस है. एक आएगा n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में, दूसरा कैन बी फ्रॉम n2 इक्वल टू 3 to n1 इक्वल टू 1. another spectral line can be n2 इक्वल टू 5 to n1 इक्वल टू 1, एंड ऐसे बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन आएगा लाइमन सीरीज में. सिमिलरली इन बॉमर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज there may be more than one spectral lines. The series will contain a group of spectral lines and all those individual spectral lines has their name. तो हम अब वो डिवीजन को देखेंगे कि लाइमन सीरीज में जो सब स्पेक्ट्रल लाइंस है उसका क्या क्या नाम है, उसका क्या एनर्जी है, किसका एनर्जी ज्यादा है, कम है, और वो सब कुछ हमें नीट की क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा. तो चलो हम डिविजन्स देख लेते हैं. सो हियर यू कैन सी द डिविजन्स फॉर द लाइमन सीरीज. यहां पर लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइंस दिया हुआ है. देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है n इक्वल टू 1 पे, दैट मीन्स ऑल दिस कंस्टिट्यूट द लाइमन सीरीज. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है n2 इक्वल टू 2
to n1 equal to 1, and we will call this spectral line the first line or the starting line is, and we will denote the first line or starting line of any series by alpha. So it is the first line of Lyman series, so it will be denoted by L alpha. Similarly, the second line will be from n2 equal to 3 to n1 equal to 1, and it will be denoted by beta. So here for Lyman series, the second line will be called L beta. Similarly, third line will be from n2 equal to 4 to n1 equal to 1, and that will be known as gamma line, and here it is L gamma, and so on it will be called. And here you see the last line for Lyman series, that is from n2 equal to infinity to n1 equal to 1, and it will be called the last line or limiting line. Okay, and it will be denoted by infinity. So here it will be L infinity. So hope now you understand all the nomenclature for all these individual spectral lines. The first line is alpha, second line known as beta, third line gamma, and so on, and the last line or limiting line is infinity. अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे. For first line is for alpha line of any series. एनर्जी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये तीन चीजें हमें जानना है. हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन का एनर्जी ज्यादा होता है, कौन सी लाइन का फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होता है, ये सब पता होना चाहिए. तो देखो, फॉर फर्स्ट लाइन एनर्जी विल बी द लोएस्ट, and for last line energy is maximum, and accordingly the wavelength for first line is maximum, wavelength for last line is minimum, and the frequency, that is nu, is minimum for first line and mu is maximum for the last line. Now you see alpha line's energy is the least and beta line's energy will be more than alpha line. Similarly, gamma line's energy will be more than beta line, and so on. And now you can also see this for wavelength. The wavelength of the alpha line is maximum and wavelength of beta line is lesser than the alpha line, but the wavelength of beta line is more than that of gamma line, and so on. Okay, so please keep this idea also in your mind. Now we have to know how to calculate the number of spectral lines. ये सिर्फ एक फॉर्मूला है. You will put the values and get the answers. क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. They will provide you the value of n2 and n1. They will tell you कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, and they will ask you the total number of spectral lines. It is very easy. You just have to remember a simple formula. So now you see the total number of spectral lines equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2. So this is the simplest formula for the calculation of total number of spectral lines. They will provide the values for n2 and n1. n2 is the number of orbit from where the electron is coming, and n1 is the number of orbit to which the electron is coming. And I will show you the type of questions in the previous year questions part. Okay, so please also remember this formula. तो अब हम बोल सकते हैं कि we have come to the end of this topic. लेकिन एक चीज बाकी है. देखो भाई, शार्पनर के बिना पेंसिल का क्या काम. ठीक वैसे ही अगर तुम रीड-बर्ग्स फॉर्मूला नहीं पढ़े तो स्पेक्ट्रल लाइंस का कोई काम नहीं. तो हमें नीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए
स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ साथ रीडबर्ग फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। अब हम रीडबर्ग्स फॉर्मूला देख लेंगे। पहले चीज तो ये जान लो कि तुम्हें बस ये फॉर्मूला चाहिए, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी देखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्या है रीडबर्ग फॉर्मूला? म्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह है रीडबर्ग्स फॉर्मूला। अब हम जान लेते हैं कि यहां पर ये जो टर्म्स है ये एक्चुअली क्या है। तो पहले आता है म्यू बार, इट इज नथिंग बट द वेव नंबर। ये देखने में खतरनाक है पर इसके अंदर कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट 1/वेवलेंथ। ठीक है, सो इट इज नोन एज द वेव नंबर and it is just the inverse of wavelength. So wave number is 1/λ, and here you see r is the Rydberg's constant and its value is approximately 1.1 meter inverse. Now you see z is nothing but the atomic number. And nextly n1, that is the orbit to which electron is coming, and n2 is the orbit from which electron is coming. So you see, this is the Rydberg formula. No need to remember any type of theory, you just remember the formula. It is wave number, that is 1/λ, and r is Rydberg's constant, z is the atomic number, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हें हर जगह काम में आएगा जब तुम स्पेक्ट्रल लाइंस का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जाओगे। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट। अब इस सब कंसेप्ट्स को कैसे क्वेश्चन में लगाना है वो हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में। ओके, सो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, और उससे आइडिया लेके, कंसेप्ट्स लेके हमें हमारा नीट का पेपर का आंसर देना है। एंड फॉर दैट आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो where you will get the solution for each and every type of previous year question. Without the knowledge for solving the numericals, ये theory part कोई काम का नहीं. So guys, please subscribe our channel and stay connected, and also stay tuned for the next lecture where you will get each and every important previous year questions explanations. अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है. Thank you all. Stay blessed, stay cool.